through a pathway. Okay, so we can talk about it. Maybe after 3 months, I can again update you about it. But right now, we are trying. Okay, MRCGP International, as you can see, it's already there in the pathway. So the only difference between internal medicine and family medicine is an inpatient setting in internal medicine and OPD setting in family medicine. So what do you all think? Kya khayal hai? Wajiha, do you want to say something or write something about it? Is that the only difference, Dr. Hina? I can see you. What do you all think? Is that the only difference, specifically those who are practicing family medicine right now? What do you all think? It's absolutely false, right? Dr. Shamsuddin, let me tell you, I'm sure that our family medicine mein abhi tak aapne practice nahi kiya. There's a huge, huge difference, right? We look at the biopsychosocial model of disease, whereas internal medicine mein disease-specific healthcare di jati hai. We give person-centered healthcare. So I'm going to discuss a scenario with you, and you're going to have an idea how family medicine plays a role in patient management specifically. So let's just quickly talk about one case where we can see a family medicine approach. So a 35 years old female, and this is an actual case which presented to me. 35 years old female, para 2, is referred by a neurologist with left-sided upper limb weakness and limping for the last 2 months. Her CBC, lipids, blood sugar, echo, MRI brain, EMG nerve conduction, CPK, ESR, CRP, ANA, everything is normal. She's been seen already by an internist, rheumatologist, and neurologist. On examination, when you examine her, she is unable to move her left arm, and power in her left lower limb is 3/5. All sensations and reflexes are normal. What would you like to explore in her history? यहाँ पर हम assume करते हैं कि हम सारी चीजें उनसे पूछ चुके हैं और देख चुके हैं और सारे टेस्ट हमारे पास हैं. She's been to multiple doctors and she's been assessed for different various चीजें. इनमें से क्या ऐसी सवाल है जो कि which would help you come to a diagnosis here? कौन सा ऐसा सवाल है जो कि which would actually help you make a diagnosis? Now you look at her scenario, everything is normal. Stress and depression, okay, if she tells you she does have some stress, but not as much, she's not depressed. She doesn't have that much of stress. So Dr. Wajiha is saying family medicine is holistic, patient-centered care, includes health promotion plus mental health. So Dr. Tariq is saying shoulder joint. Dr. Tariq, she had 3/5 power in the left lower limb as well. So how do you relate it to a shoulder joint overextension? So her left leg was also not working properly. So there's something which is known as ICE. Have you ever heard about it? ICE, I-C-E, ideas, concerns, and expectations. So when I asked her, what does she think about her whole scenario? She said, Doctor, मुझे फालिज हो गया है. आप लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा? मुझे फालिज हो गया है. And when she said that, the next question I asked her was, आपको क्यों लगता है आपको फालिज हो गया है? So she told me that her father was bedridden for many years because of falij, stroke, and so that she is badly hurt because of it. He passed away 6 months back, and then you can relate that 2 months back, she suddenly started having these symptoms of one-sided, she wasn't using that side. So this is, kaun sa hai ye? Based on the history and investigation, what could be the most likely diagnosis? Yes, Dr. Tariq, it could be somatization, but this is very typical of a conversion reaction where a patient mostly mimics a neurological disorder, or an organic disease, and it looks like, absolutely like an organic disease, but it is not. So why is it not malingering? Why do you think it's not malingering? Why is it a conversion reaction and why is it not malingering? What do you think? क्यों malingering नहीं है? Malingering भी तो हो सकता है ना, झूठ बोल रही है.
है ना? She could have lied. So how is it not malingering? So Dr. Suleiman ने बड़ा अच्छा point दिया है. Dr. Suleiman, are you practicing as a psychologist, psychiatrist or something? He said patient को कोई benefit नहीं है. One is the patient doesn't have a benefit. The other thing is that the patient is not doing it voluntarily. She doesn't have control on what she's doing. So Dr. Aves, you also seem to like practice psychiatry or psychology. So it's amazing, right? You are able to get to a diagnosis, but being a family physician, I see such cases day in and day out. And I'm sure all of you are practicing as family physicians. You get so many patients, so many females with body aches, pains, dyspepsia, headache, low mood, crying spells. And a lot of times we think that, they've been investigated so many times with so many tests, and, it's just a waste of money. It's not cost effective. So I always tell my juniors, I always tell my students, I always tell my colleagues, listen to your patient. He's telling you the diagnosis. So when we talk about family medicine approach, it means listening to your patient. It means person-centered care. It means holistic care, biopsychosocial model of disease. So family medicine is a specialty which deals with the complete, comprehensive, person-centered care and not disease-centered care, right? So, and one more thing. So which part of medicine is in play here? What do you think? ये वाले कार्टून है वैसे तो देखने को, लेकिन आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज है जो यहाँ पर मिसिंग है? What is missing here? What do you think is missing in this cartoon? Medically, क्या चीज ऐसी है जो कि you see is a problem here? What is the problem here? क्या ख्याल है? Medical ethics, absolutely. Patient's confidentiality, revealing the diagnosis, judging, so many things come into play here. So a family physician is somebody who's very sound ethically. He or she observes all the ethical principles of medicine and is empathetic to his patient, is connected to his patient. आप लोगों को पता है पहले जो GPs होते थे, although के कोई family physician, family medicine की speciality नहीं होती थी, लेकिन आपको याद है जब आपके बचपन में, I don't know if you're as old as I am, but बचपन में एक GP होता था family का, जो इतने connected होता था आप लोगों से, आपकी फैमिली उन पे ट्रस्ट करती थी और घर पे भी आ जाया करता था एक बक्सा लेके, सो वो वाला जो कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं लूज हो गया है. ठीक है, he was a part of your family, just like your family. So I think we've lost that. मोहल्ले का डॉक्टर was different, Javeria. That was like a complete physician who you would trust. अब तो ये मोहल्ले के डॉक्टर वाला जो वो है ना, वो तो वही है कि जो लूटता है, जो गलत दवाइयां देता है, जो ड्रिप्स लगाता है पैसे कमाने के लिए, इंजेक्शंस लगा देता है, स्टेरॉइड लगा देता है, so ये अब तो यहाँ पे आ गए हम. So there is no scope of specialty of family medicine in Pakistan. I think a lot of you might agree, a lot of you might disagree. It is growing. Let me tell you, it is growing. The government has recently recognized its importance. They want to bring in family medicine. They are planning a health insurance plan for the whole country. I know कि country के हालात ऐसे हैं कि बड़ा difficult लगता है trust करना, but this is in the plan, and this was in the plan for the last 2 years now. कि they want to start a health insurance plan. It is just not possible without a primary care which is based on family medicine consultant or family physician as the core of primary care. क्योंकि अगर कोई भी insurance plan को आपने implement करना है और family physician trained नहीं होंगे आपके, तो वो पूरा insurance plan इतना cost ineffective होगा कि it will not work. ठीक है, so people are asking me job opportunities for MCPS family medicine. I'm just going to tell you.
Part 1 exemption for MRCGP International, let me tell you, kabhi nahi hogi. ठीक है, it can never happen. These are two different institutes we are talking about. MRCGP International is actually an exam by Royal College of General Practitioner, whereas MCPS is an exam by College of Physicians and Surgeons of Pakistan. They will never exempt their own Part 1 with MRCGP International. So that is not a possibility. Think of other things, beta. There are other opportunities. There are other good things about it. Yes, Javedi, I agree with you. And not only is that a family physician gives more time to his patients, takes care of the patient comprehensively, but we also know that a good family physician is cost effective. So he can actually, prevent a patient from getting unnecessary investigations and unnecessary medications. So he's overall very, very cost effective. And but a family physician who's trained, not any general practitioner, right? A trained family physician. And WHO is actually now pushing the government to make it happen that the primary care should be supported by trained or qualified general practitioners, family physicians by 2030. So this is the goal. That is why the government has a lot of pressure to promote family medicine. So there's a lot of saturation in this specialty. No, there's not a lot of saturation. We hardly have a specialist in the country. एक तो already जितने भी लोग graduates होते हैं MBBS के, उसमें से 80% जो होते हैं ना, वो कोई specialty नहीं लेते और वो GPs बन जाते हैं. सिर्फ 20% specialties में जाते हैं और उस 20% में से I think hardly 0.1% जो है ना, वो family medicine में आते हैं. So family medicine पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है. और उसका रीजन भी ये है कि मेडिकल कॉलेजेस में फैमिली मेडिसिन का सब्जेक्ट जो है वो अब तक हर जगह नहीं पढ़ाया जा रहा है. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है. देख लीजिए प्लीज इसको, अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका एक पिक्चर ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए. दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन प्राइमरी केयर जर्नल. यूके का एक प्राइमरी केयर जर्नल है, उसके अंदर ये पब्लिश्ड है. सो दिस इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड यू कैन जस्ट कीप इट with you. Whoever wants to pursue anything, you can quickly look at it and understand which specialty or which pathway would you get into. Somebody who's done MCPS can work in Australia. Not yet directly नहीं है. मैं भी आप लोगों को उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है. डॉक्टर यूसुफ उसका ज्यादा आप लोगों को बताएंगे, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि MCPS is not yet recognized, FCPS is not recognized in Australia as a curriculum, but soon we are trying. It will be. इंशाल्लाह. So let me tell you कि फैमिली मेडिसिन अंडरग्रेड में अब मैंडेटरी 100 आवर्स हैं. तो हर मेडिकल कॉलेज में फैमिली मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, बढ़ रहा है. लोग हायर कर रहे हैं. कराची में तो ऑलमोस्ट ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो इट इज देयर. लाहौर में भी इट इज बीइंग recognized, और as I said कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस उनके साथ हैं तो वहां पर है. recognition of MRCGP International, PMDC ने MRCGP International और MCPS को as equivalent degrees recognize कर लिया है. So MCPS and MRCGP International are equivalent in पाकिस्तान. तो आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी है, so in Pakistan it will be considered as a family medicine postgraduate qualification. Okay, Fariha, I'm going to answer this one. Launch of family medicine diplomas throughout the country in collaboration with WHO. New job opportunities for qualified family physicians in medical colleges and university hospitals. And recently, very recently, recognition of MRCGP International by RACGP. ठीक है, so आप देख रहे हैं कि ये every year जब मैं ये presentation करती हूँ तो कोई एक चीज इसमें add हो जाती है. ठीक है, so I've been presenting this for the last 4 years and every year, alhamdulillah, कोई एक चीज इसमें ऐड हो जाती है, which is a positive progress, I would say.
So being family physicians, you should have full confidence in yourself. एक तो हमारा प्रॉब्लम मुझे हमेशा ये लगता है कि being family physicians, हमें ऐसा लगता है कि दूसरी स्पेशलिटीज वाले हमसे ज्यादा बेहतर है या उनको हमसे ज्यादा आता है. It is not about speciality, but it is about individuals. ठीक है, अगर आप if you know your stuff, if you are competent enough, there is no way that anybody can put you down. Nobody can actually challenge your knowledge because you're competent, right? So it all depends on yourself. Please stop comparing yourself from other specialists as a family physician, and you actually rock it in your own way. So talking about, and again, I think that there's this ideology that family physicians should be trained by other specialists. Please get that out of your mind. Thank you, Dr. Humaira. And that is what I'm trying to tell you. You should be taught by family physicians. देखिए, जो family physician आपको जो approach सिखाता है ना primary care की, वो कोई भी specialist नहीं सिखा सकता, दूसरा specialist नहीं सिखा सकता, I would say, क्योंकि जो दूसरे specialist हैं वो अपनी speciality में they are experts and they're very good at it, and they are good cardiologists, good neurologists, good pulmonologists, but they are not family physicians. So unless you are being trained and taught by a family physician, it is very difficult for you to understand primary care in its true sense. So please try कि जब भी आप कोई sessions लें, CMEs attend करें, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बाहर attend करें, चाहे आप internationally कहीं पर भी कोई sessions attend करें, आप please कोशिश करें कि ये देखें कि पढ़ा कौन रहा है. Is there a family physician involved or not? Because this is what it is, right? If you think you whatever you think you are, ठीक है, तो इसका कोई caption देंगे आप? Any caption coming from you? Any naughty caption from you all? Okay. कोई अच्छा सा caption देना चाहते हैं आप? Grandiose delusion. Okay, Dr. Jawad. There could be a better inspiring caption for it, nahi? There could be a good inspiring something, Oh, Dr. Ishaq, आपके connection में problem होगा because everybody else can hear me. You're beautiful if you can understand yourself. I like that, Dr. Tariq. Beautiful? Yeah, I like that. What you think of yourself is more important than what others think of you. Okay? So we are the luckiest healer. Okay, that's great. Right? So it's just that, whatever, आप अपने आप को जितना self-confidence आपका होगा ना, उतना you have a star within you. That's really good. Dr. Sameer, you need to take care of your connection. जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, because बाकी लोगों को आ रही है. ठीक है? So FCPS की पहले बात कर लेते हैं. Eligibility is part 1. As I said, जिन लोगों ने नहीं सुना, part 1 in OBGYN, part 1 in medicine, part 1 in surgery, part 1 in peds. इन चारों में से कोई भी एक अगर आपका है तो आप जो है वो फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग में वो कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग बहुत कम जगहों पर हो रही है एफसीपीएस की, और इसी वजह से जो है वो आपको स्पॉट्स नहीं मिलते. एकेयू है, इंडस मेजर ट्रेनर्स हैं, लियाकत नेशनल में भी हो रही है, एंड ज़ियाउद्दीन में रिसेंटली स्टार्ट हो गई है, जेएसएमयू में स्टार्ट हो गई है पब्लिक सेक्टर में, एंड वी आर ट्राइंग फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल. अपॉर्चुनिटीज आपको पता है इसकी कोई लिमिट नहीं है. एफसीपीएस में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है. व्हेन आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग इन 2009, उसके बाद मैंने पीएचडी परसू करना शुरू किया. 2015 में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने से पहले आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, एंड आई स्टार्टेड अ फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर देयर. आई स्टार्टेड अ डिपार्टमेंट, आई एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट, आई एस्टैब्लिश्ड अ सीनियर सिटीजन यूनिट over there, alhamdulillah. We were also taking care of the staff clinic at Liaquat National Hospital. So you see, just after completing my training, I was there, right? So इतना स्कोप है भाई. डायरेक्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन बनाता है? एंड प्रोफेसर इन 5 years, it's 5-6 years maybe, so it's the opportunities are unlimited for FCPS, and then you can go outside as well. Training हर जगह recognized होती है.
एवरीवेयर इट इज रिकग्नाइज। आप लोगों की एफसीपीएस की ट्रेनिंग आप जहां से भी करते हैं, कहीं पे भी आप जाएंगे, वो ट्रेनिंग इज रिकग्नाइज। देखिए ट्रेनिंग का फायदा ये है कि अगर आपने डिग्री नहीं भी ली है ना, तो ट्रेनिंग के बेसिस पे देयर आर कुलीग्स आई नो जिसमें जिन्होंने ट्रेनिंग करी, दे डिड नॉट टेक देयर एफसीपीएस पार्ट 2 एग्जाम एंड वेंट आउटसाइड, और आज एक र्यूमेटोलॉजिस्ट है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट है यूके में, यूएस में, सो ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे हमारे एफसीपीएस, कनाडा में तो भरे पड़े हुए हैं। सो एफसीपीएस वुड कैन टेक यू प्लेसेस, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू विथ योरसेल्फ। बहुत सारे लोग पार्ट 1 देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और एक दिन क्विट कर देते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्ट 1 दे दे के एक दिन क्विट कर दिया है? Can you identify yourself? I'm sure, I mean, I don't find it embarrassing. It's okay. Okay. Yeah. I think a lot of you, जो भी है ना, and you see this, इसको कैप्शन करना चाहते हैं, इसको कोई कैप्शन करना चाहता है, so maybe आपने इस वक्त क्विट किया है, जैसे ये शख्स जा रहा है, इसी वक्त जो है वो क्विट किया है। Fariha, it's not about liking FCPS. If you like family medicine, FCPS is the highest possible degree in family medicine in Pakistan. So FCPS is something which I told you, it's going to take you places. So do you want to caption this? करना चाहते हैं कैप्शन? क्या 2-4 हाथ लबे बाम, वाह वाह, जबरदस्त। मतलब 2-4 हाथ लगा देते तो हाथ में जो है वो खजाना आ जाता, ठीक है। No age for study. My caption is not there as I never attempted. It's okay. लेकिन I hope you pass it in the first attempt, right? Age is not a limit for achievement. That's absolutely right. And you never know how close you are. So keep attempting. मैंने पहले भी अपने साथ जितने colleagues थे मेरे लियाकत नेशनल में, उनको मैंने persuade किया, and 3 of them started giving exams. 2 ने क्विट कर दिया फिर से 2 दफा देके, तीसरी ने क्विट नहीं किया, एंड शी इज अ रेजिडेंट इन फैमिली मेडिसिन इन लियाकत नेशनल नाउ, एंड शी इज इन आई गेस 3rd ईयर जो है वो। सो आई थिंक दैट इट्स जस्ट दैट you can just get inspiration from so many people who've done it, and they have not lost hope. So I think you should keep on trying. So never give up on your dreams, right? If you're dreaming of taking FCPS, please do it. यस, अभी भी ले सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दी, अच्छा एफसीपीएस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। 4 ईयर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बता दिया, इंडक्शंस होती है इसकी जनवरी और जुलाई में, ठीक है। अब एमसीपीएस जो है ना, इसके 2 पाथवेज हैं। एमसीपीएस का एक पाथवे है 2 इयर्स ट्रेनिंग पाथवे, जो कि सिर्फ 2 जगह पे अवेलेबल है टू माई नॉलेज। प्लीज इनलाइटन मी अगर कहीं और आप लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल में तो नहीं है। बीइंग द डीन ऑफ सीपीएसपी आई नो कि ये 2 जगह है, एट इंडस है 2 इयर्स का, एंड एट एकेयू है जो कि सिर्फ गिलगित में है अवेलेबल। सो ये ट्रेनिंग पाथवे का फायदा ये है कि अगर आपने 2 साल एमसीपीएस कर लिया और आप उसके बाद पार्ट 1 दे दें, तो आपको 2 साल और एफसीपीएस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स। तो ये 2 साल आपके, अगर आपने पार्ट 1 की कोशिश आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपको एटलीस्ट स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एमसीपीएस ट्रेनिंग पाथवे आप स्टार्ट कर दें, और 2 साल फिर प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आप ड्यूरिंग पार्ट 1 दे के और फिर इंडक्ट हो जाए उसमें एफसीपीएस में, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। इसकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आर इन सऊदी एंड गल्फ। बिसाइड्स पाकिस्तान में तो है ही, आप स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इंडस में हमारे पास तकरीबन मोर देन 50 फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट इंडक्टेड है थ्रू आउट द नेटवर्क, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, कराची में। सो देयर सो मेनी एंड वी आर स्टिल इन नीड ऑफ मोर, वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मोर। AKU में भी है जो है फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट, लियाकत में भी है। सो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो MCPS फैमिली मेडिसिन के बाद आपको जो है वो AKU में एज अ फैमिली फिजिशियन इंडक्ट किया जा सकता है, और उनके आउटरीच सेंटर्स में भी काफी जगह होती है, उनकी बार बार अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। सो आउटरीच में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आउटरीच में पार्ट टाइम वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपना GP प्रैक्टिस भी साथ में करिए, ठीक है। सो मेक योर ओन पेशेंट्स एज वेल। सो टेक always don't keep all your eggs in one basket. अगर आप एक काम करते हैं ना, तो दूसरा काम भी देखिए साथ में ना। अपने आप को हर चीज एक इंस्टीट्यूशन के हवाले ना कर दिया करें। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, राइट? यू कैन एनी टाइम, you should be able to move,
पाथ। तो ये सारे ना अपने लिए ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज को खुला रखा करें। इसीलिए फरीहा कह रही हूँ सैलरी कम होती है, इसीलिए कह रही हूँ कि ऑल्टरनेट पाथवेज ढूंढें, इसके बजाय कि आप हर वक्त जलते कुड़ते रहें कि मेरी क्यों सैलरी कम है, क्यों नहीं बढ़ा रहे, ये इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है। आजकल सब इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं बेटा, और रिसेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई हुई है, पूरी दुनिया में आई हुई है। सो यू हैव टू बी द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ, नॉट योर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। RTMC अगर आपने रजिस्टर किया था, अब भी आप यू कैन कम बैक, गेट योर सेल्फ डूइंग द वर्कशॉप्स एंड टेक द एग्जाम। ठीक है, एक्सपीरियंस पाथवे से भी। सो दिस इज एक्सपीरियंस पाथवे। 5 years की कोई भी प्रैक्टिस चलेगी, जहां भी आपने, इवन यहां तक कि टेली हेल्थ प्रैक्टिस भी CPSP आपकी मान लेता है। ठीक है, सो एनी 5 years प्रैक्टिस would actually allow you to take the MCPS exam through the experience pathway. इसका नुकसान ये है कि इसमें ट्रेनिंग नहीं होती है, और वो ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए ट्रेनिंग हर जगह रिकग्नाइज्ड है, तो आपको रिकग्निशन इतनी नहीं मिलेगी। सेकेंडली, इसका नुकसान ये है कि करने के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने पार्ट 1 करना है और FCPS करना है, तो आपको कोई एग्जेम्पशन फिलहाल नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पाथवे है, और ट्रेनिंग पाथवे में ट्रेनिंग की एग्जेम्पशन मिलती है, डिग्री लेने की नहीं। ठीक है, एग्जाम की तो कोई लिमिट, वर्कशॉप्स की और एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक दफा आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर लिमिट होती है। ठीक है सुलेमान। सो इसकी इंडक्शन जो है वो ट्वाइस अ ईयर हो रही होती हैं, और इसमें एक थियोरी एग्जाम है MRCGP इंटरनेशनल में, और एक जो है वो आपका इसकी भी इसी तरीके से 2 years ट्रेनिंग पाथवे है, जो सिर्फ इंडस में मौजूद है। ठीक है, सिर्फ इंडस करवा रहा है ये ट्रेनिंग पाथवे, लेकिन आई एम श्योर अदर इंस्टीट्यूशंस विल टेक अप सून। इसका 2 years का ट्रेनिंग पाथवे है, दैट यू कैन टेक, एंड देन यू कैन टेक योर MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम। दूसरा इसका एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे है, वो आप कोई 5 years के कोई भी एक्सपीरियंस के बाद आप MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम ले सकते हैं। दोनों की वैल्यू जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में RACGP ने दोनों को अलग नहीं किया है। अभी तक RACGP ने ट्रेनिंग पाथवे और एक्सपीरियंस पाथवे को अलग नहीं किया है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है और पास हुए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सून आई एम गोइंग टू टेल यू कि ट्रेनिंग की अपनी वैल्यू होती है, आप जितनी ट्रेनिंग करके जाएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, फैमिली मेडिसिन में आपने एग्जाम दिया है, कौन सा एग्जाम दिया है समीर? YouTube. How is FCPS training different from MRCGP International? FCPS मैंने कहा ना 4 years ट्रेनिंग है, और MRCGP International के ये 2 पाथवेज हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस पाथवे एंड ट्रेनिंग पाथवे। ट्रेनिंग पाथवे इस वक्त सिर्फ इंडस कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में है, जो कि थ्रू आउट द नेटवर्क है। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये लाहौर में भी है, मुजफ्फरगढ़ में भी है, पिंडी में भी है। सो नेक्स्ट मंथ वी विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम अगेन। बैच 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। प्लीज आप जो महक है उनको अपना नंबर भेज दीजिए, सो दैट शी कैन कीप यू इन द लूप। शी इज गोइंग टू सेंड यू मटीरियल इफ यू नीड इट। ठीक है, सो प्लीज जो है वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट में रहिए महक के साथ, सो शी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। MRCGP और MCPS का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। MRCGP इंटरनेशनल और उसका क्राइटेरिया सेम है। तलाल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है ना वो अभी तक रिकग्नाइज नहीं होती एज फेस टू फेस ट्रेनिंग। ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं अपना जो है वो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमाज है, ठीक है, डिप्लोमाज हैं, और इसके अलावा CME ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ये सब आपको बेसिकली एक्सपीरियंस पाथवे के लिए ट्रेन करते हैं। तो अगर आपका 5 years का एक्सपीरियंस है और आपको एग्जाम लेना चाह रहे हैं आप MRCGP इंटरनेशनल का या फिर MCPS का, तो व्हाट यू कुड डू इज दैट यू कुड अटेंड एनी ऑनलाइन कोर्स या CME कोर्स, और उसमें आप जो है वो थोड़ा पढ़ लिख के और एग्जाम इजीली पास कर सकें, क्योंकि ये प्रेपरेटरी कोर्सेज होते हैं। दूसरा ये कि इसमें अपडेट्स हो जाते हैं, तो प्लीज जो भी कोर्स लें ये देख लें कि उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप लोगों को
पढ़ाया जा रहा है और उस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है आपको सूट करता है, आप फ्लेक्सिबली उसको अटेंड कर सकते हैं, वीकेंड्स पर हो और आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल रही हो, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही हो, और उसमें केसेस डिस्कस हो रहे हो, ताकि आप ऑस्की के लिए भी प्रिपेयर हो, ताकि आप टोक्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। सो ये सब चीजें ना कोर्सेज में प्लीज देख लिया करें कि ये सब चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। अगर एमसीपीएस किया हुआ है और आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो देयर आर ऑप्शंस। ये डिप्लोमा काफी जगहों पर अवेलेबल है, जियाउद्दीन में भी एक डिप्लोमा अवेलेबल है 2 years का, जिसके बाद बहुत सारे लोग कनाडा में ट्रेनिंग लेके जाते हैं और वो ट्रेनिंग रिकग्नाइज्ड हो जाती है। ठीक है, MRCGP pass will help in MRCP preparation. Yes, it would. Definitely it would. क्योंकि MRCGP और MRCP में देखिए फर्क तो इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन वाला है ना, तो काफी सारा कंटेंट तो सेम है, लेकिन जो एडिशनली आपको MRCGP में पढ़ना पड़ता है ना, OBGYN पढ़नी पड़ती है आपको, उसमें पीड्स पढ़नी पड़ती है जो आपको MRCP में नहीं पढ़नी पड़ती है। तो एक्चुअली उस तरह देखा जाए तो यहाँ पर जीपी वाले जो ट्रेनिंग्स है या जो एग्जाम्स है उसमें आपको मोर ऑफ होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पढ़नी पड़ती है, और इंटरनल मेडिसिन में आपको इन पेशेंट अप्रोच, क्रिटिकल पेशेंट मैनेजमेंट, वो आपको ज्यादा पढ़नी पड़ती है। ठीक है, सो बट ऐसा मत करिए कि एमआरसीपी को इजी करने के लिए एमआरसीजीपी दे दीजिए। प्लीज डोंट बी वन ऑफ द 3 इडियट्स। ठीक है, यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर आपने एक सिलेक्ट किया है ना कैरियर, हमेशा याद रखें यार, अगर आपने मेडिसिन में जाना है ना, आप इंटरनल मेडिसिन में जाएं, आपने कार्डियोलॉजी में जाना है वहां जाएं, आपने सर्जरी में जाना है सर्जरी में जाएं, लेकिन आप पहले से सोचें व्हाट डू यू रियली वांट टू डू विथ योर लाइफ। प्लीज डोंट डू दिस के जीपी का प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर जाके एमआरसीपी में जा रहे हैं, फिर समझ नहीं आ रहा तो फिर जीपी की तरफ आ रहे हैं। डोंट डू दिस प्लीज। देखिए ये ना आप लोग खुद ही अपने साथ ज्यादती करते हैं। जो भी कैरियर चूज करें ना उसमें एक्सेल करें। ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट। मैंने जब फैमिली मेडिसिन चूज किया था ना, तो ये जब बीच में मुझे रियलाइज हुआ ना कि अभी पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है फैमिली मेडिसिन का, दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20 years बैक, 20 साल पहले की बात है। ठीक है, 20 साल पहले मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और तब मैंने ये सोचा कि यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो मैंने क्या करना है, आई थॉट कि लेट्स बी द बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट बन जाना है। सो वन डे मैं अगर एक ही स्पेशलिटी में सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट पीपल होंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना आगे। सो जो भी सिलेक्ट करे ना, टेक डू योर बेस्ट एंड डोंट लूज होप। ठीक है, बार बार चेंज मत करें कि वो मेरा दोस्त वो कर रहा है, डरमा कर रहा है, वो मैं भी वहां चली जाऊं, वो कर रहा है मैं वहां पर चली जाऊं। डोंट डू दैट, दैट इज दुश्मनी विथ योर सेल्फ। मेडिसिन 2 years एज एक्सपीरियंस काउंट होता है MOH UAE में। MCPS फैमिली मेडिसिन 2 years एज एन एक्सपीरियंस काउंट होता है? नहीं, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो फिर आपको, आई डोंट नो, आई मीन क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। सो एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू अगर आपको MCPS MRCGP करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक अप कोर्सेज, यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। वहां पे आप ट्रेन तो नहीं कहूंगी मैं, नॉलेज स्किल्स डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोर्सेज में प्लीज देख लीजिए कि जो है वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम पास करने में भी हेल्प करेंगे, और आपको जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस को अपडेट करने में हेल्प करेंगे। सो अपडेटेड सेशंस लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लाइक द कोर्स आई एम टीचिंग, इस तरीके से व्हाट वी डू इज कि हम ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, हम BCQs डिस्कस करते हैं, यू कैन सी वन ऑफ द BCQs हियर, एंड जो लेटेस्ट गाइडलाइंस, पॉसिबल लेटेस्ट गाइडलाइंस होती हैं वो सारी डिस्कस होती है रिगार्डिंग एनी डिजीज। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट जैसे कि मेडिसिन के नाम, हाउ टू प्रिस्क्राइब, ये सब चीजें भी डिस्कस होती हैं। फिर केसेस डिस्कस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस केस, एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस ऑस्की सेशंस। जैसे ऑस्की में या पेशेंट कंसल्टेशन के सेशंस होते हैं, तो दिस इज जस्ट 10 second वीडियो, इफ यू कैन लिसन टू इट, कि इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। I generally wake up once at night, and throughout the day I pass 4 to 5 times a day. Okay, okay. And what about your? Okay, so you took antibiotics for how long? Did you complete the course? 3 days. 3 days, yeah. Okay, 3 days.
ओके, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यू नो, कि किस तरीके से ऑनलाइन भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स जिसमें हम ऑस्की की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? और ये आपको पेशेंट मैनेजमेंट, और इसी तरह हम उर्दू में करते हैं तो टोक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो इस तरीके से, यू नो, वी प्रैक्टिस डिफरेंट केसेस एंड उसी की फिर हम हिस्ट्री डिस्कशन करते हैं. सो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप कोई रिकॉर्डेड सेशंस की जगह इंटरैक्टिव जो कोर्सेज होते हैं ना, जिसमें इंटरैक्टिव कंपोनेंट होता है, वो वाले कोर्सेज लें जिसमें आप डायरेक्टली सुपरवाइजर से या फैसिलिटेटर से इंटरैक्ट करके, यू नो, यू कैन लर्न दिस वे. सो दिस इज जस्ट, यू नो, टू लेट यू नो कि हाउ टू चूज कि आपने कौन सी प्रेपरेटरी क्लासेस अटेंड करनी है, किस तरीके से करनी है. दिस इज जस्ट टू लेट यू नो feedback of a recent candidate who passed her MRCGP international exam in her first attempt, and also Dr. Nasir, I think आप लोग जानते होंगे इनको, जो लोग सऊदी में रहते हैं. So he also passed all his Dubai Health Authority exam, MRCGP exam. इन्होंने सब first attempt में माशाल्लाह पास किया है. So just listen to this. Dr. Nadia जानती है. बाय चांस एक और कोर्स के थ्रू डॉक्टर फरीदा से इंट्रोड्यूस हुई थी. उन्होंने एक फ्री टॉक्स का सेशन लिया था, वहां से मुझे उनका पता चला और फिर मैंने अपने MRCGP इंटरनेशनल के एग्जाम के लिए उनके कोर्स को अटेंड किया. बहुत प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए. और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रही, मैंने उनके साथ मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया. उसके बाद ADHD के लिए और CBT के सेशन करवाए उन्होंने, और बहुत अच्छे और इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उन्होंने उसमें शामिल किया. मैंने बहुत ज्यादा गेन किया. वो रिफ्रेशर कोर्सेज करवाती हैं, मैं वो ज्वाइन करती हूँ और मुझे उससे बहुत फायदा हो रहा है और मैं आगे भी इंशाल्लाह इस टीम का हिस्सा रहूंगी. थैंक यू. ओके, सो आलिया पूछ रही है कि हमें ट्रेनिंग के लिए पे करना पड़ेगा और हमें पेमेंट नहीं मिलेगी. यस, यस, आई एम गोइंग टू कम टू इट. देखो, जो ट्रेनिंग्स है ना, बेसिकली जो MCPS की ट्रेनिंग है ना, वो CPSP का जो वो है. और CPSP एज एन इंस्टीट्यूशन की अच्छी बात ये है कि व्हाट दे डू इज कि वो इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं कि आपको ट्रेनीज को पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू. क्योंकि ट्रेनीज जो है, आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को पेमेंट मिलनी चाहिए सामने. लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये दुनिया भर में होता है कि ट्रेनिंग के पैसे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर वो ट्रेनिंग ऑन जॉब आप कर रहे हो ना, तो यू कैन अफोर्ड इट. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर यूसुफ विल लेट यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है कि जब आप जाएंगे तो वहां पे आप जॉब भी कर रहे होंगे और आप ट्रेनिंग भी साथ में कर रहे होंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे होंगे. तो ट्रेनिंग के आपको पैसे देने पड़ेंगे और जॉब के आपको पैसे मिलेंगे. तो वो दोनों चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और आप एक्चुअली कमा भी रहे होते हैं और ट्रेन भी हो रहे होते हैं. पाकिस्तान में मसला ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, और ये जनरली सिर्फ फैमिली फिजिशियंस के लिए नहीं है. आप लोगों को पता होगा कि गायनी वाले भी जो है वो घर पे बैठे हुए होते हैं. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती है, या इतनी पुअर जॉब्स मिल रही होती है. आई वाज टोल्ड जस्ट 2 days बैक कि डेंटिस्ट 20-30 हजार रुपए में काम करते हैं. आई डोंट वांट टू नेम द इंस्टीट्यूशंस, लेकिन 20-30 हजार रुपए महीने में काम कर रहे होते हैं. आई मीन इट्स जस्ट क्रेजी, यू नो, इट्स जस्ट नॉट ह्यूमेन. बट यू नो, इट इज व्हाट इट इज, अनफॉर्चुनेटली. अब बात यही है कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लैंड अप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ऑन जॉब करें, कोई भी ट्रेनिंग करें जिसमें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो जॉब भी साथ साथ करते जाएं, ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग और जॉब जो है वो दोनों साथ चलती जाए. दैट इज द होल पॉइंट. ठीक है. सो अपॉर्चुनिटीज जो है वो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, ये हमारे लोग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बहुत सारे हमारे MCPS के लोग हॉस्पिटल्स मैनेज कर रहे हैं. अपने हॉस्पिटल्स या दूसरों के हॉस्पिटल्स में जो है वो एज मैनेजर्स लगे हुए हैं, एंड दे मैनेज रियली वेल. प्राइमरी केयर क्लिनिक्स तो कर ही सकते हैं. अपना GP प्रैक्टिस तो आप जब चाहें जहां चाहें खोल के बैठ सकते. इंसेंटिव बेसिस पे भी काम कर सकते हैं. 70-30, 60-40 का इंसेंटिव होता है, जिसमें 70% डॉक्टर को मिलते हैं, 30% जो इंस्टीट्यूशन लेता है, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं.
डॉक्टर जहीर, अभी मैंने इसका जवाब दिया था आपका ना, सो प्रॉब्ली आप रिकॉर्डिंग जरूर ले लीजिएगा। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों को मिल जाती है एज स्पेशलिस्ट, आप लोग को एमसीपीएस एमआरसीजीपी पाथवे के थ्रू मिल जाती है। एफसीपीएस है तो जाहिर है आप प्रोफेसर तक पहुंच सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन एक और चीज है जिसको आप एज अ पैरेलल वो चला सकते हैं कि भाई अगर आपने फैमिली मेडिसिन एमसीपीएस किया हुआ है तो आपने एमसीपीएस मेडिकल एजुकेशन भी कर लिया, या आपने मेडिकल एजुकेशन में कोई मास्टर्स कर लिया, तो आप एक बहुत अच्छे मेडिकल एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू। हमारे साथ इंडस में डॉक्टर शाइस्ता है, शी इज डन हर डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन एंड एमसीपीएस एंड शी इज नाउ परसुइंग मेडिकल एजुकेशन एंड शी टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर प्रोग्राम्स जो इंडस में होते हैं, एमआरसीजीपी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी। लीडरशिप रोल्स में हेड ऑफ कैंपसेस हैं हमारे फैमिली फिजिशियंस। वी हैव अ गुड एग्जांपल, डॉक्टर, पता नहीं आप लोग जानते हैं, डॉक्टर आफाक बुखारी in at Indus is heading a campus, you know. So this is also something which you can explore. International opportunities तो आपके पास है ही, ठीक है, ये तो सारी opportunities आपके पास होती हैं। So do you want to give a caption to this? इसको कैप्शन देना चाहते हैं? यस, डॉक्टर नादिया कह रही है अपनी स्टैब्लिश भी कर सकते हैं किडी क्लिनिक, बिल्कुल करिए। और कुछ नहीं, घर से शुरू करिए, एक रूम से आसपास फिर देखिए स्मार्ट वर्क। अच्छा, पेरिफेरी ऑफ केपीके में जहीर देखिए, कश्मीर में और केपीके के अराउंड जो है ना वो बहुत ज्यादा फैमिली मेडिसिन में हलचल हो रही है। एंड आप लोगों के जो केएमयू के फैमिली मेडिसिन के हेड है डॉक्टर जलील, उनसे मिलिए अगर इफ यू कैन। Dr. Jalil is trying his best to get a cadre for family medicine through the government, ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर में वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई केडर बन जाए फैमिली मेडिसिन का, सो प्लीज डू दैट, ठीक है। डॉक्टर तारिक, थैंक यू वेरी मच। जो है वो आप मक्खन लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन the smoother the better, smart selection. So don't only work hard. I wouldn't say don't work hard. Don't only work hard. You have to work hard. Work hard किए बगैर तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। So don't only work hard, work smart. ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी सक्सेस के लिए ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, ठीक है। सो with this I would want to take up questions जब तक डॉक्टर यूसुफ ज्वाइन कर रहे हैं। सो आप लोगों के जो भी सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के सवालात अभी रहने दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो अभी रिसेंटली एमआरसीजीपी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हुआ है, उसमें ना एएमसी नहीं देना पड़ता है, और एएमसी के बगैर ही अगर आपको जॉब मिल जाती है तो यू कैन do a job under supervision and then get into the training pathway of RACGP, ठीक है। So वो आप कर सकते हैं, that is something which is doable. After passing MCPS, is it better to go for MRCGP International or get 2 years training for MCPS? देखो, MCPS अगर experience pathway से किया हुआ है ना, तो there is no point in going for 2 years of training pathway for MCPS, कोई point नहीं है। या तो आप एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की ट्रेनिंग के साथ एमआरसीजीपी कर लीजिए, या वैसे ही एमआरसीजीपी इंटरनेशनल दे दीजिए, वो भी काफी है आपके लिए। आप एमआरसीजीपी इंटरनेशनल दे दें, एमसीपीएस आपका ऑलरेडी हुआ है, कहीं ना कहीं आपको स्पॉट मिल जाएगा। अच्छा, ये आपको आईएल्स बेहतर है या ओईटी, ये आपको डॉक्टर यूसुफ ही बताएंगे। So many did MRCGP International, but we were not designated as MRCGP recognized in Gulf. So many after MRCGP did MRCP. Yes, I know that, क्योंकि MRCGP का वही वाली बात है कि क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना, उसमें ट्रेनिंग पाथवे नहीं है, इस वजह से जरा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि इट इज गेटिंग रिकग्निशन। सो MRCGP ट्रेनिंग सेंटर इन कराची, डॉक्टर रियाज, सिर्फ इंडस है। MRCGP ट्रेनिंग सिर्फ इंडस कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में हो रही है फिलहाल, और खुल जाएंगे इंशाल्लाह, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और ये इंडस में थ्रू आउट द नेटवर्क हो रही है। और आपको पता है कि इंडस का नेटवर्क सिर्फ कराची में ही नहीं है बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान है। सो यस, यू कैन डू इट। जितने लोग भी एक्सपीरियंस पाथवे से करना चाह रहे हैं एमसीपीएस एमआरसीजीपी, गो फॉर इट, ठीक है, कर लीजिए। अभी इस वक्त एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की एक्सपीरियंस पाथवे और ट्रेनिंग पाथवे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, सो डू इट। यस, एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे भी आपका है, तो ट्रेनिंग अगर है तो देखिए, ट्रेनिंग के बदले में आपकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन गो देयर एंड गेट योरसेल्फ इंडक्टेड इन द ट्रेनिंग पाथवे एंड डू द फुल ट्रेनिंग। यू लिव इन दुबई नाउ, सो
न्यूजीलैंड, नो नादिया, न्यूजीलैंड में अभी तक जो है ना वो कोई भी चीज रिकॉग्नाइज नहीं है. सो नोबडी हैज, मैंने सुना हो कि कोई न्यूजीलैंड में जाके यहाँ से पाकिस्तान में काम करना शुरू किया हो. फैकल्टी ऑफ फैमिली मेडिसिन कराची में इतना एस्टैब्लिश नहीं है, हर चीज लाहौर में होती है. क्यों? रियली नहीं, कराची में ही कराची है यार. फैमिली मेडिसिन तो पूरा पूरा कराची ही है, लाहौर में कुछ नहीं है. बल्कि ये कैसे कह दिया आपने? Department in KSA since last 3 years, experience can be counted as training. No, experience cannot be counted as training. If doing DFM, then will that 2-year training certificate and explanation count for MRCGP International? You can try. I don't think so, but you can try. आप try कर सकते हो. MRCGP International वाले थोड़े flexible हैं, training pathways को recognize कर लेते हैं. MCPS वाले इतने flexible नहीं है, वो training pathways को इतना recognize नहीं करते हैं. So you can try. Please guide about preparatory courses for MRCGP International. Saima, मैंने अभी बताया है. I am conducting one preparatory course. If you want to induct yourself, महक से ये जो आपने नंबर जिससे आपको ये सारे messages आए हैं उस पे contact कर लीजिए. She's going to help you. Is there any MRCGP training center in Dubai? MRCGP training center सिवाय Indus College of Family Medicine and Public Health के कहीं पे भी नहीं है साउथ एशिया में. कहीं भी नहीं है साउथ एशिया में. इट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पर खुला है, इसके अलावा कोई भी नहीं है. व्हाट अबाउट द रोटेशंस मैम, आर देयर एक्सेप्टेबल टू इंटरनेशनली? यस, यस. मेरा कोर्स जो है वो सारा इट इज कंप्लीटली ऑनलाइन, वीकेंड्स पे होता है. और मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी किस तरीके से कंडक्ट होता है. तो उसके लिए आप जिस नंबर पे 0341 वाला जो नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. 6 महीने का कोर्स होता है. ऑलमोस्ट सैटरडेज, एवरी सैटरडे होता है 5 to 8 PM पाकिस्तान टाइम. सो यू कैन जस्ट कम, अटेंड इट, इंटरेक्शन करें. हर मॉड्यूल जो है वो तकरीबन 2 क्लासेस में, मतलब 6 घंटे में कंप्लीट होता है एक एक मॉड्यूल. जैसे कार्डियोलॉजी मॉड्यूल, पल्मोनोलॉजी मॉड्यूल, एंड देन उसके बाद वी मूव ऑन. टोक्स कब होने वाले हैं? टोक्स जो है वो अभी तो हुए भाई, अभी तो हुए हैं 2 हफ्ते पहले. सो टोक्स अब होंगे जाके अप्रैल में. ठीक है, अप्रैल में होंगे टोक्स. स्कोप ऑफ MCPS इन मिडिल ईस्ट. MCPS ट्रेनिंग पाथवे बहुत अच्छा है. MCPS ट्रेनिंग पाथवे कहीं पे भी रिकग्नाइज होगा क्योंकि उसमें ट्रेनिंग है. एक्सपीरियंस पाथवे मिडिल ईस्ट में भी है, बट बहुत हर जगह नहीं है. कुछ लोग ट्रेनिंग मांगते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं एक्सपीरियंस पाथवे पे, क्योंकि देखिए उनको तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना. तो अगर उनको एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा तो जाहिर है कि दे वुड रिकग्नाइज इट. तो नीड की बात है, जहां नीड है वो रिकग्नाइज कर लेंगे, नीड नहीं है उनकी तो वो कहेंगे भैया हमें ट्रेनिंग ला के दो. MRCGP की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इन इंडस इंशाल्लाह अभी ओपन होने वाली है विद इन अ वीक और 2. Theory paper of MCPS is just BCQs. Yes, so MCQs या best choice questions. MRCGP में भी सिर्फ MCQs आते हैं थियोरी में, और MCPS में भी सिर्फ MCQs आते हैं थियोरी में. MCPS के जो क्लिनिकल एग्जाम होता है वो उसको टोक्स कहते हैं, और MRCGP के क्लिनिकल एग्जाम को ऑस्की कहते हैं. ऑस्की 10 मिनट की होती है, टोक्स 7 मिनट का होता है. ये ना मुझे टेबल बनाना चाहिए, वो डिफरेंस के नहीं होते टेबल. दूसरा, टोक्स में 1 या 2 टास्क करने होते हैं, और ऑस्की में पूरा पेशेंट देखना होता है, मैनेजमेंट करनी होती है. ठीक है. अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ FCPS ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए पाथवे MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम. अच्छा, अगर आप MRCGP कर लेंगे ना तो आपको AMC नहीं करना पड़ेगा. टू माय नॉलेज डॉक्टर यूसुफ आ गए हैं, मैं उनसे फर्दर आप सवाल कर सकते हैं, और मैं उनसे कुछ जो आप लोगों के सवाल है वो पहले मैं बता दूंगी, और उसके बाद आप लोग प्लीज सवालों की भरमार करिएगा. ठीक है. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है. तो यस महक, कैन यू अलाउ हिम इन प्लीज? Assalamu alaikum, Dr. Yusuf. Can you hear me, please? जी, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर यूसुफ, आपके लिए ना बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है। अगर आप यहाँ पर होते ना तो ये लोग जो है वो आपको साथ ले जाते अपने। सो आई थिंक विदाउट बीइंग द बैरियर बिटवीन यू एंड देम, मैं कुछ सवालात आपसे पूछना चाह रही थी जो इन्होंने बहुत तेजी से मुझसे किए हैं। एक तो नंबर 1 इनका सवाल ये है कि MRCGP इंटरनेशनल के बाद क्या AMC इनको देना पड़ेगा वहां पर आने के लिए? Thank you, Professor Farida, for giving me this opportunity. So let me just give you a little bit of basic information about the Australian general practice entry pathways, and which may help to give me the foundation to answer this question. So first of all, पहली बात तो ये कि जो भी डिग्री है, unless it is fully comparable to Australian fellowship, they have multiple factors they consider to decide whether a candidate is comparable to an Australian GP. So the degree is one thing. Second thing is their training and where they have trained for and how comparable is that training to Australian training. Third thing is CPD, continuous professional. Fourth thing is the recency of practice. So these are some of the factors they consider, and that's why the answer is usually on case-by-case basis. So my generic simple answer will be that if somebody has done MRCGP International, they can come through what we call Specialist International Medical Graduates, SIMG pathway, not need to do AMC Part 1 or Part 2. Sorry for the long answer. नहीं डॉक्टर यूसुफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इन लोगों को शायद ये वाले कंफ्यूजन बहुत है। बहुत सारे लोग ना एक्सपीरियंस पाथवे से MRCGP इंटरनेशनल किए हुए हैं या MCPS का तो मैंने इनको ऑलरेडी बताया कि वो वी आर ट्राइंग कि MCPS और FCPS को हम रिकग्नाइज करवा लें, लेकिन MRCGP इंटरनेशनल रिकग्नाइज हुआ है। तो जो एक्सपीरियंस पाथवे से आएंगे तो बेसिकली उनका वहां पर आके क्या पाथवे होगा कि वो कैसे उनको जॉब लेनी पड़ेगी। सबसे पहले वहां पर आके अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वो वहां आ जाते हैं, जॉब करते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इज दैट राइट? अच्छा, तो इसमें माय सिंपल आंसर विल बी अगेन के people who are coming through the experience pathway, they will practically have to, and depends on their experience where it is. Let's say if their experience is in a country where experience is recognized in Australia, then their pathway can be more facilitated. Let's say their experience in Pakistan and they've done the international MRCGP international through experience in Pakistan, then they will have to come to what we call the standard pathway. So in the standard pathway, they will have to do AMC Part 1 at least, and then they can enter into what we call FSP program, which is Fellowship Support Program. Now that's different from the registrarship or training program, which is called AGPT program, for which you have to do AMC Part 1 and Part 2 before you can enter into the AMC, standard general practice program. There are multiple programs to support international graduates. And recently there has been a Senate standing committee, which was specifically established by the Australian government in order to simplify pathways for international graduate, because Australia is losing the competition with many other countries when it comes to the international graduates. So they want to actually simplify the pathways, but there are multiple at the moment and it can create a lot of confusion. So I can understand from everyone that they will be quite confused. And that's what the answers are really have to be on case-by-case basis, that what may be the ideal situation for them. So I'm happy to answer question which may be based on, I suppose, case scenario or case studies to see what will be the ideal situation for a candidate. So Dr. Yusuf, let me give you a situation. यहाँ का एक कैंडिडेट है जो कि पाकिस्तान से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसने MRCGP इंटरनेशनल पास किया हुआ है
और उसके पास MCPS भी है थ्रू दी एक्सपीरियंस पाथवे। अब उसको जो है उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, और उसको वो जॉब क्या मिल सकती है? पहला मेरा सवाल ये है, क्या कोई जॉब वहां अंडर सुपरविजन काम करने के लिए ऐसे कैंडिडेट को मिल सकती है? ये सवाल। The answer is yes. And Yes. in fact, I've recently recruited 2 graduates in my own practice in similar one. One is from Pakistan and one is from Iran. अच्छा, but they इनको have to डॉक्टर come to यूसुफ AMC नहीं देना पड़ा? इनको AMC इनिशियली तो नहीं देना पड़ा ना, आने से पहले तो नहीं देना पड़ा? नहीं देना पड़ा, no, नहीं देना नहीं. पड़ा। अच्छा, हाँ, दूसरा लेकिन सवाल ये है डॉक्टर यूसुफ, जी. IELTS दिया इन्होंने या OET देना बेहतर है? IELTS देना बेहतर है या OET, या वो भी नहीं देना पड़ा? any of the, no, they have to do it. In fact, Okay. even if you are a UK graduate, if you're coming to Australia, you have to do IELTS and OCT. It is so crazy, but that's how Australian system is. Yeah, so you have to do the English exam. Anyone, that's doesn't fine. matter which one they do. There is no preference to it. They can do whichever suits them, but they have to do one or the other. सही। अच्छा, अब डॉक्टर यूसुफ ये बताएं कि ये ग्रेजुएट को कोई जॉब मिल गई और MRCGP इंटरनेशनल है उनके पास एक्सपीरियंस पाथवे, MCPS एक्सपीरियंस पाथवे, ये ऑस्ट्रेलिया में अंडर सुपरविजन कहीं पे जॉब के लिए आ गए। अब इनका वहां पर सारा असेसमेंट होगा कि इन्होंने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, ट्रेनिंग कोई की है या नहीं की है। ये सारे जो उनका असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे आगे ये डिसीजन लिया जाएगा ऑन अ केस टू केस बेसिस वेदर दे नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर बिफोर डूइंग FRACGP। और क्या ये भी डिसीजन लिया जाएगा कि अब उनको AMC देना है या नहीं देना है वहां जाने के बाद? जी, if somebody gets a job and gets a registration, they can do चीजें different हैं. Let me explain. AMC requirement is with the board, medical board, or Australian Medical Council. And AMC exam is basically an equivalence exam with an Australian graduate, a medical graduate. But it's not comparable to a specialist degree like fellowship. So they are 2 different things. So let's say the AMC is really purely to enter into medical workforce, whether you are registrable with the medical board. So the medical board either have the standard pathway for which you need to do AMC part 1 and part 2, or they have a specialist pathway in which if your degree is comparable or partially comparable, then they can waive off the AMC and allow you based on your experience to be registrable with the medical board. But the next step is for you to actually get the job. Now, there are a few things there. So yes, you are recognized by the medical board that you are registrable, but you still need to come into a pathway for 2 reasons. You need what we call an exemption for working in Australia to access Medicare. Now, that's nothing to do with medical board. That's to do with the Medicare, which is the universal insurance of all Australian citizens. Now, to get that exemption, you have to be on a pathway which is recognized for that purpose by Department of Health, not by medical board. That's what gets confusing. So for that purpose, then you need to be coming into a program of training. Now, that training can be either through the standard general practice training, which is called AGPT, which require AMC part 1, part 2, or you can come into FSP, which is called Fellowship Support Program, which is a new pathway for international graduates, and usually they require AMC part 1. Usually I'm saying is because if somebody has done international and it is recognizable, partially equivalent in Australia, then they can be exempt from AMC part 1. They can go into the FSP pathway for fellowship. Third program is called MDRAP, which is called More Doctors for Rural Australia program. That allows doctors to join a general practice in a rural setting only, and they don't, or they are not part of any fellowship program. They have a lower level of billing or fees, and hence their income is less, which allows them to either do AMC part 1, part 2, and go into the standard pathway or the FSC pathway later on. So they allow them up to 2 years to do that. It's like a step
stepping stone. So there are 3 different pathways. सही। सो डॉक्टर यूसुफ, एक सवाल और है मेरा कि अगर आप जो है वो वहां पे आपको जॉब मिल गई है विदाउट टेकिंग एएमसी, आपने एएमसी भी नहीं दिया, अभी आपको जॉब मिल गई, तो आप सिर्फ अंडर सुपरविजन काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते जब तक कि आप FRACGP के किसी पाथवे में इंडक्ट होके एग्जाम क्लियर ना कर ले। Am I right? That is yes, you are correct. All these pathways I've described, all of them are under supervision only. ठीक, रूरल सेटिंग वाला भी इसी तरह होगा? रूरल सेटिंग वाला भी ऐसे ही है जिसमें लेस अर्निंग है? All of them. ऑल ऑफ देम। सो कहीं पे भी आप अगर विदाउट ट्रेनिंग जाते हैं, यहां से जॉब मिल जाती है आपको MRCGP इंटरनेशनल के बेसिस पे, तो आपको इवेंचुअली वहां जाके किसी ना किसी पाथवे जो कि आपके लिए सूटेबल है उसमें आपको इंडक्ट होना पड़ेगा और आपको FRACGP इवेंचुअली देना पड़ेगा टू बिकम अ कंसल्टेंट एंड टू बी एबल टू अर्न मोर। ठीक है डॉक्टर तारिक, सवाल प्लीज पूछ लीजिए, इसमें आप लिख दीजिए। जी डॉक्टर फरीदा आप सही फरमा रही हैं, और इसमें ये है कि जो भी पाथवेज हैं उनका एंड रिजल्ट ये है कि यू हैव टू डू ए फेलोशिप। यू कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग indefinitely without doing a fellowship. Previously, we allowed people sometime up to 8 years or 10 years to complete their fellowship. Now they are more strict. So they allow maximum up to 5 years, but that even with a lot of exemptions. They expect that within 2 to 3 years, someone must enter a pathway and must exit by fellowship within 3 to 4 years time. ठीक, ये पूछ रहे लेवल ऑफ सुपरविजन क्या होगा? तो जहां तक मुझे समझ आया है डॉक्टर यूसुफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप अंडर सुपरविजन वहां पर काम करते हैं तो आपका इनिशियली हर पेशेंट सुपरवाइजर देखेगा। वंस ही ट्रस्ट्स यू तो फिर हो सकता है थोड़ा सा लेवल ऑफ सुपरविजन कम हो जाए, लेकिन जब तक आप कंसल्टेंट नहीं बन जाते तब तक आपको अंडर सुपरविजन ही काम करना पड़ेगा। So there are different, जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, there are different levels of supervision. Practically what we, and supervision is decided, or level is decided through an entrance exam which is called PESCI. मैं उसको अभी explain करूंगा later on. So what happens basically that whenever you apply for a position or a job in Australia as an international graduate, the board does its job for registration, department does its job for your pathway, and then you have to appear for what we call a PESCI exam, which is basically a structured exam to match you with the position you're applying for and to see whether you are suitable for the position, as well as what sort of training, support, or I suppose further education you need to provide the service for that position specifically. It's quite important that it's a matching exam. It's not necessarily just an assessment exam. So for example, last week I did a PESCI for 4 graduates. It takes about 1.5 to 2 hours structured interview of each graduate. And we do risk assessment. We go through the CVs, their experiences, then we do their assessment, and then we do a final report for the board before they actually get their final tick of approval. So in general, what we see that most of the graduate, and frankly, everybody is coming from Pakistan. I can tell you now, if they've been, if they have their training haven't been in a, let's say, Western country where the training is recognized by Australia directly, then they will be on level 1 supervision. Level 1 supervision basically mean like all my registrars when they start, all international graduate when they start, they're on level 1 supervision. The way it works that your first week to 2 to 4 weeks, you will be under strict supervision where every patient you see, I will be seeing the patient with you. After a month, once we know that, okay, I can see that you have the skills, knowledge, the attitude, and as well as you are safe practitioner, then what happens that we allow more patients to be seen by you, as well as that you can consult with us on phone or ask us question when you need to. And then gradually that supervision level is relaxed, but you still remain level 1 supervision for up to a year or so. And then depending on your progress, CPD,
and depending on your college exam progress, if you've done, let's say, FRSGP Part 1, then your supervision level changes to level 2 or level 3. You only get unsupervised position once you have completed full fellowship. You do not become unsupervised till you have done fellowship. And I just to emphasize that this applies to graduates coming from UK who have done FRGP. So when they come here with FRGP for 6 months, they are under supervision, and then they have a work-based assessment. Because their degree is comparable to Australia, so they don't do as such any exam. They only do a work-based assessment and they get full fellowship of Australia. But they still have to do 6 months of supervised training in Australia. अच्छा डॉक्टर यूसुफ रिगार्डिंग FCPS, अगर कोई FCPS का ट्रेनी फिलहाल अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसको सबसे पहले तो AMC देना पड़ेगा, वी अंडरस्टैंड दैट. वहां पर आकर लेवल 1 सुपरविजन में ही होगा वो, लेकिन ग्रेजुअली जब वो FRACGP के किसी पाथवे के लिए अप्लाई करेगा ट्रेनिंग के लिए, तो क्या उसको ट्रेनिंग में एग्जेम्पशन वहां पर मिलेगी FCPS की बेसिस पर? नो, फिलहाल FCPS के लिए कोई exemption नहीं है. They will have to do all 3 parts of the exam. The only thing is that once their experience and their comparability is finalized, they will be possibly partially comparable. Then they may get exemption in the period of the training. So for example, normally the FSP program, the fellowship support program, they have to do minimum 24 months or 2 years of program before they are eligible for the FRACGP exam. But if they've done FCPS and their experience is to some much recognizable, they may reduce their training time to, let's say, 1 year and allow them to go for the exam. But what Dr. Frida, as you know, you're coming to Sydney, inshallah, as well. What we are working on is to bring the college, RACGP leadership to Pakistan, have a look at the facilities, give them direct orientation, so we can get some level of at least partial comparability of MCPS and FCPS in Australia, which can streamline these pathways. But at the moment, frankly, they will be pretty much standard pathway. डॉक्टर तारिक हैं जो कि जिन्होंने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, और इनकी जो रिक्रूटर है उनसे कुछ बात हुई है. डॉक्टर तारिक, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. Thank you very much, Dr. Farida. As you shared the email of Mr. Dave, and we have a meeting twice in this last 2 weeks, they were telling and explaining that we have a pathway called PEP pathway or practice experience pathway. They just told us to apply for an EPIC account, verify your credential from on behalf of AMC by the ECFNG, and then they told us to submit the credential for partially comparability by the AMC. And those who have done the MRCGP international, mentioning especially with the South Asia, they are exempted from the AMC exam. And once their license has been approved there, then the next step, they have to apply for the APRA. Once they get the recognition from the APRA, before that, they will have a contract signed with the GP. After this, they will join the GP clinic of to whom they have signed the contract for the next 4 years. After at least they will start the job from day one. They will be a paid job for the first 3 months. It will be a contract like 150 hours, $150 per hour for the first 3 months. And later on, they will get the Medicare number, and they will earn the 65% of the billing for the first year. For the first 6 months, they have to attempt the FRACGP AKT exam.
and then further they will follow. Once they clear the exams and the clinical and get the FRCGP fellowship, then they can apply for a permanent resident, or they can work in other GPs. But it depends on the 10 years moratorium. They start from MM2 to MM7. So in some areas, the moratorium has decreased to 3 years of minimum, and then depends on the areas and the GPs who offering the contract to them. So I think, Doctor, you are explaining the other pathways, but we have been told about the practice experience pathway. So what do you think? They are telling us the right way, or we are doing to follow it or not? Hey, thank Okay, Dr. you, Yusuf, Dr. can you Tariq. please reply to this? मुझे तो, yeah, didn't make sense to me because it was very complicated, but maybe you could explain. No, I'll explain, inshallah. So there are multiple, I suppose, aspect of what Dr. Tariq Saab has mentioned. So let me answer one by one. So first answer is about PEP pathway. So PEP pathway used to be the pathway which finished this year, and now is called FSP program. So when I was talking about the fellowship support program, that used to be called PEP pathway in the past, and they have changed that. So there is no more new entry into PEP pathway. Anybody who was in the PEP pathway had to change over to FSP. So that's number one. Number two is in terms of comparability. As I said, if you have done the MRCGP International South Asia, it depends on if you have done through assessment or whether done through work experience only. So the comparability or partial comparability, level 3 they are talking about, it really depends on that how you have attained that degree. And as I mentioned to you earlier, the comparability have 7 different other factors they consider, not just your degree. So that information is all available on RSGP website. I've actually prepared a summary and the slides, but unfortunately I'm driving, so I can't show you, but I'm very happy to send it to Dr. Frida and she can share with all of you as well. The third part to this is about, third part is about the percentages and salary and everything else. So let me be very clear to you that Australia, the general practices are all, most of the general practices in Australia, majority I would say, are independent businesses, which means they are not owned by the government or department. And each of them offer you different contracts based on their own preference. So whichever contract you sign, that may be offered by that specific general practice. And they have different requirements, and they may put certain restriction on you to ensure that you stay with them for a certain period of time. In terms of immigration and applying for residence, it's a completely different discussion. I probably won't go into that at this stage. Yes, agreed. So I hope that's clear. I'm happy to answer any further question in this regard. Any other questions you have? और कोई सवाल है तो प्लीज अगेन चैट बॉक्स पे लिख दीजिए. टेम्पररी वीजा एक सवाल है कि जॉब पे मिल जाएगी क्या? जॉब मिलने पे टेम्पररी वीजा मिल जाती है डॉक्टर यूसुफ? जी, सो उसका प्रोसेस ये होता है, जिस तरह फर्ज किया कि अभी जो एक डॉक्टर साहिबा हैं गुजरांवाले से, जिनके लिए अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं. So what happens ke we first organized a job offer for her. We got her to put all her experience, which we knew that will be to some level recognizable in Australia. And then after that, we organized the PESCI exam, which I was talking about earlier, that every graduate has to do the PESCI exam. She cleared the PESCI exam, and now we have started the visa process. So we have to sponsor the doctor. And it costs around, I think the practice will be paying about $5,000, and the doctor will be paying another, I think $6,000 or $7,000 to apply for that immigration and visa process. And they get a work visa for at least a couple of years.
As I said, that's a different discussion. And then they get a what we call a temporary residence or work visa. And then that changes into residence once you have completed your fellowship. Okay, Dr. Mohammed Dean has a question. You can ask Dr. Dean. Yeah, Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Farida. First of all, really grateful that you have arranged such a nice, conversation, and really thankful to Dr. Yusuf as well. They are very busy in Australia, I can understand. Thank you so much, Dr. Yusuf. This is Dr. Mohammed Dean. Actually, I want to ask you regarding the point which you told regarding the passkey. Actually, what I understood that the new recognition of MRCGP International South Asia, they consider us as SIMGs, as you told us earlier. For us, being SIMGs, we need to, do our primary source verification through EPIC and get the get registered with the AMC portal. And after that, when we got the job offer, there is no more pesky kind of a thing for us being MRCGP International. My question is that correct? Because what I heard that RSCGP has introduced a comparability assessment, which is equivalent in a sort of equivalent with the pesky. Pesky was is a structured interview which a candidate give face to face, but this comparability assessment by RSCGP is not like face to face. There are some documents which need to submit to them, and they, after their comparability assessment, they will let us know that yes, your accessible comparability assessment outcome is for level 1, level 2, or level 3 job process when we get join the job there. So after getting the level that, for example, level 2 or level 3, after certain period like 6 months or so, we can enter into the fellowship pathway. So after explaining or telling all this process, my question is it correct that pesky is no more needed for us being SIMGs? Thank you so much. Shukriya, Dr. Mohammadin. Very good question. As I mentioned earlier, if you are coming under SIMG pathway, and after your assessment, your not just your degree, your experience, your CPD, as said, the 7-point criteria is fulfilled, then you don't come through standard pathway, you come through the specialist pathway. In that case, you will not have to do pesky. So all the explanation which I did earlier was for the standard pathway. The specialist pathway is different. So do we qualify for the specialist pathway if we have MRCGP International through the experienced pathway? My answer is no. And as I said earlier, that it's not just a degree. Dr. Sabha, it's actually 7 other things they have to fulfill. So it's not just you got international degree. You also need, they also look at where have you actually worked, what's your experience. So let's say, I'm just giving an example. Dr. Dean has done the MRCGP International. He has worked in Dubai and Saudi and some of these areas where some of the experience is actually comparable to Australia. Then they will accept the experience, they will accept the degree, and they will give the partial comparability. As long as the experience is recent, CPTs are up to date, then they will exempt the pesky and they come straight to the specialist pathway, and they're able to do the exam within a short period of time, sometimes 6 months, sometimes within a year. That's a specialist pathway. As I said, majority of the graduates I'm talking with tonight, if their experience is all in Pakistan, then they will be more than likely coming in the standard pathway. Now, with the MRCGP International, there is a lot of discussion happening in the college at the moment. I had the council meeting and we have discussed that as well, because it's created quite a bit of confusion. Because as you know, that MRCGP International is not even recognized in UK itself. So although the Australia has given it partial comparability, but
they haven't really explained clearly to the possible candidates that what it actually means. Even the recruitment agencies been contacting me, Dr. Frida, the other person who came through your reference as well, contacted me because they are trying to clarify that with the college as well. And college answer is very standard that yes, partially comparable, but need to fulfill the other 6 criteria as well. सो डॉक्टर यूसुफ ये बताइए कि कुछ जो FCPS हमारे ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर जो कि ट्रेनिंग पाथवे से आए हुए हैं या फिर MCPS जो कि ट्रेनिंग किए हुए हैं, क्या उनके लिए बेहतर है कि वो MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम भी कर लें ताकि उनका थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में इन होना आसान हो जाए फिल वक्त? आई नो एक दफा FCPS MCPS को हम इंशाल्लाह रिकग्निशन में कहीं ना कहीं स्पेस हो जाएगी उसकी तो और बात है, लेकिन इस वक्त क्या उनका बेहतर है MRCGP इंटरनेशनल कर लेना? Frankly, I wouldn't advise that. In my view, they can actually come much easier through the standard pathway than try to do through specialist pathway. Specialist pathway is actually much harder because it requires a lot of paperwork, a lot of assessment. They're very subjective, and it's not, like a criteria where it's all or none principle. They do on case-by-case basis. But if you come through standard pathway, frankly, it's much easier. Frankly, everybody who's listening here tonight, and even if they're done international South Asia and they may not qualify directly through comparability pathway or SIMG pathway, I would highly recommend them. They should consider standard pathway. There's a lot of opportunities in Australia. Yes, it is quite confusing. They are trying to simplify, but opportunities are there definitely. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यूसुफ। 30 मिनट्स का टाइम जो है वो डॉक्टर यूसुफ का जो है वो ओवर हो गया है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर यूसुफ ने टाइम निकाला है हमारे लिए, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेटा आप लोग चाह रहे हैं कि एक हाँ ना में जवाब मिल जाए, ये करना है या वो करना है या यू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड पाथवे में यस AMC की नीड है फरिया, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। सो इसमें जो है वो आपको खुद ही थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खुद ही पता करना पड़ेगा, कुछ चीजों को खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। डॉक्टर यूसुफ इज हेल्पिंग अस, लेकिन ही कैन नॉट टेल अस कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एट एन इंडिविजुअल लेवल। सो कस्टमाइज्ड वो आपको आंसर उतना इजीली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं एक्सपीरियंस कहाँ का है, ट्रेनिंग है या नहीं है, आपने ऑस्ट्रेलिया कब जाना है, आपके यहाँ इस वक्त क्या कंडीशन है, वहां पर आपके पास कितने अरसे जो है वो आप सर्वाइव कर सकते हैं। देयर सो मेनी अदर थिंग्स टू इट, एंड एग्जाम देने की आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, सो मेनी थिंग्स टू इट। सो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, लुक फॉर योरसेल्व्स एंड सी। और जरूरी नहीं है कि सारे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं भाई, मतलब और भी चीजें हैं, पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, और भी कहीं का सोच सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट, एंड व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू, मे अल्लाह टेक you through that direction, and you can get your vision one day. So thank you very much Dr. Yusuf, and thank you everybody. Please आप लोगों के जो भी और further वो हो तो email addresses, क्या Dr. Yusuf कोई email address आप share कर सकते हैं so that I can share it with them, अगर कोई इनको personal सवाल करने हैं या ऐसा कुछ है तो maybe. Right now I can't provide an email, I'm driving. Dr. Fida, I'll discuss with you later, but I'm very happy to forward any question through you. I'll be happy to answer or find the answer. Sure, we'll do that. So what you could do is that you could send your queries. ठीक है Dr. Yusuf, you can leave. आप please drive करते रहिए, आप अपनी जान उसमें नहीं डालिए। So ये मैं एक आप लोगों को address दे रही हूँ। इस पे जो है वो आप लोग अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जो मैं डॉक्टर यूसुफ को फॉरवर्ड कर देंगे। महक प्लीज इस पे कोई भी क्वेरीज आती है उस पे सब्जेक्ट में लिख दीजिए FRCGP पाथवे और अपना सवाल भेज दीजिए। वी विल फॉरवर्ड इट टू डॉक्टर यूसुफ, एंड वो आप लोगों को टाइमली इंशाल्लाह जैसे उनका कन्वीनियंस होगा उस हिसाब से जवाब दे देंगे, ठीक है। सो 1-year training program at Indus की opening date inshallah we are starting in last week of August, ठीक है। सो अगस्त में ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, अगस्त सितंबर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू जो है वो अप्लाई करना है MRCGP इंटरनेशनल के लिए या MCPS उनको देना है, तो प्लीज इवन देन यू कैन लेट मी नो एट दिस एड्रेस। इस एड्रेस पे प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए, महक वुड आंसर योर क्वेरीज। कोई भी सवाल हो आपको रिगार्डिंग द कोर्स और एनीथिंग,
and I can help you with it, I would be happy to. So FMPT program can help you clear MRCGP exam. Yes, family medicine practice training program at Indus is recognized by MRCGP International South Asian Board. So yes, it will help you. Okay. So thank you very much, and please fill up this feedback form. Maybe you could also write your queries in the feedback form. वो हम feedback form में जो आपकी queries होगी वो भी आगे भेज देंगे. So see you all, and let's all have lunch now because भूख बहुत लग रही है. So Allah Hafiz, bye bye. See you all.